So let us take an example here. An electromagnetic wave of frequency f is equal to 3 megahertz passes through vacuum into a dielectric medium. So let us say, we have two mediums. So this is a vacuum and this is dielectric. So the wave passes from vacuum to dielectric. Okay, it goes like this. Okay, and this is the frequency. And this medium has a relative permittivity of 4, and we have to find out. So अगर यहाँ पे lambda है और frequency f है, we have to find the new wavelength and we have to find the new frequency. Okay, so we have been given these 4 options here. Lambda is half or doubled, frequency is half or doubled or remains unchanged, like that. We have these different options. So first thing I'll make you clear. Okay, the first thing is that the frequency of EM wave always remains same. Frequency of EM wave always remains same. Now this is because it depends only on the source. It depends only on the source. Okay, it depends only on the source. And what is the source? The source is the oscillating charge. What is the source? The source is the oscillating charge. Therefore, the frequency will not change. So f dash will be equal to f. Okay, so frequency के बारे में हो चुका. Now let us talk about wavelength. Let us talk about wavelength. So if I consider this as vacuum here, the speed of light will be c. Speed क्या होगा यहाँ पे c होगा. और यहाँ पे जो speed होगा उसको हम v मान लेते हैं. ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं. तो हम लोगों ने देखा है, we have seen that the ratio of speed of light, okay, to speed in medium 1 to speed in medium 2 is directly proportional to wavelength 1 by wavelength 2, right? Correct. This is because speed is equal to velocity into frequency. So wavelength into frequency lambda 1, c2 is equal to lambda 2f. If you take the ratio, f will get cancelled. So you will get this one. You will get c1 by c2 is equal to lambda 1 by lambda. Now c1 is how much? C1 is speed of light, that is c, and c2 will be how much? So c2 will be v. Lambda 1 is lambda and is lambda dash. So if we can just put the value of v here, we'll get the answer. We can just put the value of v here, we'll get the answer. So what is the value of v? Okay, so you've already seen the options, so I'll delete these options from here. Lambda is half doubled. So let us see, right? We'll have to put the value of v. Okay, so how to put the value of v? So v will be, because you know what is c? C is 1 by under root mu naught e naught, mu naught epsilon naught. So v is actually c, speed of light in a medium. So that will be 1 by under root mu naught epsilon r. Okay, so you will have to put epsilon medium. You'll have to put epsilon medium, and we have considered a non-magnetic. Space. Okay, that there are no magnetic effects because it's not given in the question. Therefore, we can use mu naught. So this will become c, because 1 by mu naught e naught is c, and this is epsilon r. So this will become c, and epsilon r is under root 4. This will become c by 2. Okay, this has become c by 2. So what we will do now is see clearly. So we will use this in equation number 1. Okay, so we have this as equation number 1. So we have got this as v. Okay, so c by v is equal to lambda by lambda dash. V कितना है? V is c by 2 is equal to lambda by lambda dash.
So this will be cancelled. This will be 2 is equal to lambda by lambda dash, and lambda dash will be lambda by 2. So the wavelength will be half. So the wavelength will be what? So the wavelength will be half. So is this point clear to everyone? Is this point clear? Yes. So this question is electromagnetic wave in vacuum has electric field and magnetic field which are always perpendicular to each other. So this is a known fact. ये तो हम लोग को पता ही है कि electric field और magnetic field जो है they are always perpendicular. If this is the electric field and this is the magnetic field, they are always perpendicular and this is the direction of propagation. Right? Direction of propagation is given by E cross B. आप देख सकते हो यहाँ पे E cross B इधर आ रहा है क्या? E cross B हाँ आ रहा है. So this gives you the direction of electromagnetic wave. So यहाँ पे पूछा गया the direction of polarization is given by x vector. तो x vector किसके पैरेलल है? b vector के e vector के. तो I just want to say you one thing कि आप ये ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो पोलराइजेशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन उसमें होता है. तो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट the polarization, okay, if you want you can write it down. The polarization of electromagnetic wave. Do you know what is polarization? हमने उसमें डिस्कस किया था वेव ऑप्टिक्स में, राइट? जैसे कोई रे ट्रैवल कर रहा है तो हमने ऑर्डिनरी लाइट था, ऑर्डिनरी लाइट को हमने पोलराइज किया था यूजिंग पोलराइजर. याद है आप लोगों को? तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is always, this is always along the plane of oscillation. It's always along the plane of oscillation of electric field. Okay, along the plane of oscillation of electric field. Okay, this is the first thing. So therefore x is parallel to E. तो ये दो में से कोई एक सही है. ठीक है, पहली बात. दूसरा पॉइंट ये है, हमसे बोला गया and that of the wave propagation is given by k vector. तो k vector का क्या होगा? It is parallel to E cross B और B cross E. तो जो डायरेक्शन होता है, the direction is given by the pointing vector. वो भी आप ध्यान रखिए यहाँ पे. ठीक है, डायरेक्शन जो होता है EM वेव का, डायरेक्शन ऑफ EM वेव ये आपको याद रखना पड़ेगा. EM वेव इज गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर. ओके, बाय डायरेक्शन. तो ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या है बेसिकली? ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है एस वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाय म्यू नॉट ई क्रॉस बी. दिस इज द डायरेक्शन. तो ई क्रॉस बी से डायरेक्शन मिलता है, इसके लिए ये वाला सही है. देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट. आपको ये दोनों चीज ध्यान रखना होगा. ठीक है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ऑलराइट, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस. ओके, चलो we'll discuss this question. An electromagnetic wave with frequency omega lambda travels in the positive y direction. So positive y के लिए इक्वेशन आपका क्या आएगा? ओमेगा टी माइनस के वाई ऐसा आएगा. ठीक है, ओमेगा टी माइनस के वाई. नेगेटिव y होता तो ओमेगा टी प्लस के वाई आता. ओके, सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. तो आपसे बोला गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब पहले तो पॉजिटिव वाई के लिए ओमेगा टी माइनस के वाई होना चाहिए. मतलब या तो ये होगा. ठीक है, ये नहीं हो सकता. ओके, अब दूसरी बात ये है कि आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या दिया गया है? आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किससे मिलता है? ई क्रॉस बी से मिलता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो ई क्रॉस बी आपको दिया गया है जे कैप. ठीक है, और आपको बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो आपको दिया गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी वो है आपका आई क्रॉस. तो अब आप खुद सोच सकते हो कि ई का क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए आपका जेड, है ना, यानी के कैप होना चाहिए. तभी ये के क्रॉस आई क्या होगा? जे होगा. इसका मतलब जेड कैप. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, यहाँ पे के कैप को जेड कैप लिखा है.
Did you understand this, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो आपको दिया गया है यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है जिसका एरिया आपको दिया गया है 60, ये दिया गया है डी और ये चार्ज दिया गया है। तो इस प्लेट पे है +90 कूलम माइक्रो कूलम, इस पे है -90 कूलम। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस दिए गए थे 2.5 into 10 raised to -8, 2 into 10 raised to -7, 1.63 10 raised to -11 और लास्ट ऑप्शन था 0। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये चार्ज धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा है, ये चार्ज धीरे धीरे यहाँ से लीक हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर अभी हमें तो क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो हमने यहाँ पे एक लूप कंसीडर कर लिया, इस तरह का एक लूप कंसीडर कर लिया और ऐसा मान यहाँ पे एज्यूम किया कि हाँ चलो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये अपना डीएल वेक्टर। जब हम यहाँ पे लगाएंगे एम्पीरियन लूप B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, तो ये हो जाएगा अपना B जो हम मान सकते हैं कि सेंटर से एक R डिस्टेंस पे ये जो B का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो ऐसा अगर हमने माना तो यहाँ पे आप B को बाहर ले लोगे, DL का इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा और इसमें जो करंट इनक्लोज्ड है इस वाले पोर्शन में जो करंट इनक्लोज हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में जो करंट इनक्लोज हो जाएगा वो करंट कितना इनक्लोज हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल करंट डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द प्लेट, तो ये प्लेट का एरिया है, मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पाई आर कैंसिल हो गया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, यानी म्यू नॉट I बाई 2a इंटू आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। अगर हम एट सेंटर देखें, इसके एट सेंटर इस जो हमने देखा है यहाँ पे, ये जो हमने कंसीडर किया है, तो इसका जो सेंटर है ये वाला पॉइंट, सेंटर पे तो आर कितना होगा, 0 होगा। आर 0 होगा तो फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, फील्ड का वैल्यू 0 आ जाएगा। क्योंकि बाकी कोई भी पॉइंट पे आप देखोगे, इसके किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ तो 0 और किसी भी पॉइंट पे देखोगे आप तो इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन प्रोपोर्शनल टू आर वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हम विल गो विद द लास्ट ऑप्शन दैट इज द डी ऑप्शन, द आंसर विल बी 0। सो इसको इस तरह से हमें समझना होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इट इज आउट ऑफ, आप बोल सकते हो सिलेबस थोड़ा, लेकिन इसको ऐसे समझना होगा। ठीक है, so we'll end with today's class and we will meet again tomorrow.